also No, the I am wife the or first only wife? wife after divorce. हैं? I'm the only wife after divorce. तो उसका इनके सलमा जी बानो से डाइवोर्स हो चुका है जी जी वो अरे वो तो वाइफ तो कोई भी लिख दे ना कुछ भी लिख दे उससे उससे सर इससे कोई लीगल राइट थोड़ा ना पैदा हो जाएगा मतलब ओनली टू डेमो बात सुनिए जी मिस्टर सिरपुरकर जी अपने आप को क्लेम करती हैं कि वो अयूब खान साहब की पहली पत्नी है अपना निकाहनामा इत्यादि वो प्रस्तुत करना पड़ेगा. Impugned order 2 applications have been adjudicated by the trial court. One is under order 8 rule 1A for taking documents on record and another is under order 16 for summoning witnesses. The document application that has been rejected, summoning application that has been partly allowed. Now the part which has been rejected, that has relevance only if my application for taking documents on record is allowed. So I'll address my lords on that, my lord. जी One Ayub Khan, he was in service of Western Coalfields Limited, my lord. जी The respondent number 1, claiming to be his wife, filed a suit for declaration that nomination made by him in the records of WCL जी in my favor, I am also the wife, is null and void. This is the suit, my lord. also Both the are, wife or first wife my lords. also No, the I am wife the or first only wife wife after divorce. हैं? I am the only wife after divorce. तो उसका इनके जी सलमा बानो से डाइवोर्स हो चुका है जी वो विटनेसेस को हमने जिन्होंने डाइवोर्स कराया उनको समन भी किया है. दैट पार्ट हैज बीन अलाउड बाय द जी इम्प्यूग्ड जी ऑर्डर. जी So both are claiming to be. फिर क्या क्या एप्लीकेशन आपका कौन सा डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर नहीं लिया डॉक्यूमेंट्स जो नहीं लिए रिकॉर्ड में विथ रिगार्ड टू ट्रीटमेंट एंड मर्ग इंटीमेशन एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड ऑफ द डिसीज्ड. उससे क्या रिलेवेंस है सूट किस चीज का है Suit is for declaration that she is wife and therefore she is claiming herself to be a legal successor to the state of the disease and therefore Ayub Khan and therefore nomination made in my favor is void. This is what she says. उसमें ना इलाज की जरूरत है ना मर्ग की जरूरत है Sir, जब तक आपका ये एलिगेशन ना हो कि इसने मार दिया उसको I'll just point out why it is necessary. Page 32 are the documents. Page 32 बताइए. 32 onwards, my lord should see. My lords may kindly come to page 34. Yes. This is the consent form which I was filled in hospital. Page 34, my lord should see at the left side bottom. My signatures are there as wife. अरे वो तो वाइफ तो कोई भी लिख दे ना कुछ भी लिख दे उससे इससे कोई लीगल राइट थोड़ा ना पैदा हो जाएगा मतलब ओनली टू डेमो बात सुनिए जी मिस्टर सिरपुरकर जी दिस कोर्ट हैज एन एडवांटेज ऑफ डीलिंग विद सच अ सीजन्ड लॉयर लाइक यू. आपको मालूम है कि इन दस्तावेजों से कोई राइट टाइटल प्रोड्यूस नहीं होता है उसको अपना निकाहनामा जो आपके पक्षकार है जो कि अपने आप को क्लेम करती हैं कि वो अयूब खान साहब की पहली पत्नी है अपना निकाहनामा इत्यादि वो प्रस्तुत करना पड़ेगा वो प्रस्तुत करके प्रमाणित करना पड़ेगा उसी से इन दस्तावेजों से थोड़ा ना कुछ प्रमाणित होने वाला है मतलब FIR लिखाने जाऊं मैं एक और उसमें लिख दूं कि मैं जो है उनका दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का जो है लीगल एयर हूं और तो फिर सिर्फ क्लेम फाइल करने के सारे अधिकार मैं ही ले लूं FIR के आधार पर ऐसा तो होता नहीं है इस दस्तावेज की कोई सेंक्टिटी नहीं है only to substantiate my plea सब्सटेंशिएट नहीं होता आपको क्या बताना पड़ेगा आपको मालूम है आपका निकाहनामा प्रूव करना पड़ेगा आपको यह प्रूव करना पड़ेगा दैट योर मैरिज सब्सिस्टेड एंड ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द मैरिज either he entered into a marriage alliance with this plaintiff Salma Bano or that there was some dissolution of marriage. ये सब चीजें आपको सूट में वहां प्रमाणित करनी पड़ेंगी ये तो इस दस्तावेज का कोई वैल्यू नहीं है. ओनली वन मोर पॉइंट और फिर आपका वहां पर नॉमिनेशन था कि नहीं था वो तो दैट इज अ मैटर टू बी डिसाइडेड बाय द दैट्स व्हाट आई एम सेइंग वो सब सक्सेशन के लिए सिर्फ यह है कि मर्ग इंटीमेशन में गवाह के रूप में आपका नाम है उस पर आगे पत्नी लिख दिया उससे कुछ नहीं होगा दैट इज व्हाट आई एम पॉइंटिंग आउट. सक्सेशन का केस ऑलरेडी उसी कोर्ट में अलग चल रहा है ये डॉक्यूमेंट्स उस केस में फाइल किए हुए हैं एंड I tried to confront the witness with these documents under Order 8 Rule 1A. At that time, the respondents themselves have objected for confrontation, and therefore the occasion for this filing this application arose. कोई औचित्य नहीं है इन दस्तावेजों का कोई औचित्य नहीं है आप भी समझते हैं मैं भी समझता हूँ अगर जरा सा भी औचित्य होता तो I would have allowed. That is all. क्या करना है इसको विड्रॉ करना है My lords will pass an order. देखिएगा Shri Jaideep Sirpurkar, Learned Counsel for the petitioner. This miscellaneous petition is filed by the defendant number 5 being aggrieved of
under Article 227 being of the Constitution of India, being aggrieved of order dated 11/11/2022, passed by Learned First Civil Judge Senior Division Parasia District Chindwara in RCS 21-A Pate 2016, dismissing an application under Order 8 Rule 1 CPC for taking documents on record, namely the Merg intimation. कहाँ है वो documents की list कुछ? The list is not filed. अच्छा, That those are page 32 onwards. 32 onwards, namely the consent for anesthesia procedure at Care Hospital, where allegedly Ayub Khan was operated, And the documents of police investigation. and documents of police investigation, where name of the petitioner appears as wife in a case pertaining to succession. ये सूट किसका है? Declaration. Declaration of A declaration that nomination in my favor is null and void. declaration that nomination in favor of the defendant number 5 is valid and plaintiff Is not valid. is not, Is not valid. Plaintiff has sought a declaration that nomination in my favor is not valid. क्या लिखा? In a suit that declare nomination in favor of the present petitioner is not valid, and in fact plaintiff is the wife. Next para. As far as present defendant is concerned, there is a nomination in her favor. Full stop. These documents are not sufficient to throw light on her status as a wife. Full stop. Petitioner is required to produce some other evidence to prove her status as a wife of late Ayub Khan. Full stop. Therefore, trial court has rightly held that these documents cannot be taken on record, specifically recording a finding that this defendant had earlier also filed an application which was decided by order dated 7/9/2021. Full stop. Trial court has categorically recorded a finding that suit is for declaration and permanent injunction. Full stop. Plaintiff's evidence is already over. Defendant number 5, that is the present petitioner, has not filed any counterclaim, and the fact of death of Ayub Khan during service is an admitted fact. In view of such facts, such ancillary documents are of no help, and therefore there is no error apparent in the issued order calling for interference in the supervisory jurisdiction of this court. In petition fails and is dismissed. I'm of this.